हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कमेंट सेक्शन. Today we will see the comment section from Wordpress. So here, this one is showing that notification. It is showing that we have received one comment from one of user that we have not taken an action on that. Means हमें एक कमेंट रिसीव हुई है जिस पर हमने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है. सो पहले चलते हैं हमारी वेबसाइट पर. जो अभी एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट है हेलो वर्ल्ड. हम वो पोस्ट पर जाने के बाद जो यूज़र को कमेंट सेक्शन का बॉक्स ओपन होता है उसमें जो भी यूज़र है वो कमेंट करेंगे. जैसे कि आई विल कमेंट इट हियर. पोस्ट कमेंट. सो ये कमेंट डायरेक्टली अप्रूव हो गई है. मीन्स ये वेबसाइट पर तो आ गई है क्योंकि ये एडमिन यूज़र ने कमेंट की है. हम अगर देखेंगे कि जो भी अननोन यूज़र होगा उसके लिए अगर कोई भी अननोन यूज़र हमारी पोस्ट पे कमेंट करता है तो उसके लिए यहाँ पे एक तो सबसे पहले लॉग इन टू रिप्लाई ऑप्शन आया है क्योंकि हमने वर्डप्रेस में वैसी सेटिंग की है. सेटिंग में इन डिस्कशन यहाँ पे अदर कमेंट सेटिंग्स में हमने ये चेक किया है. इसलिए यूज़र को फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स सेइंग दैट टू रजिस्टर्ड और लॉग इन फॉर पोस्टिंग एनी कमेंट. सो नाउ विल सेव इट एंड विल ट्राई इट हियर. सो ये देखिए यहाँ पे कमेंट सेक्शन बॉक्स इनेबल हो गया है. यहाँ पे आई विल राइट ए new comment. I'll add one name as Ankit, email ankit@gmail.com, and website I'll write it at www.mywebsite.net. यहाँ पे अगर यूज़र को लगता है कि उसके डिटेल्स हमारे पास सेव हो तो वो यूज़र यहाँ पे ये चेक बॉक्स करेगा. सो सेव माय नेम, ईमेल एंड वेबसाइट इन दिस ब्राउज़र फॉर नेक्स्ट टाइम आई कमेंट. मीन्स ये ब्राउज़र के हिस्ट्री के लिए ये ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर. सो विल पोस्ट कमेंट. ये देखो यहाँ पर ये शो हो रहा है कि योर कमेंट इज़ अवेटिंग मॉडरेशन. I will write a new comment. This is the comment of user Ankit. So if we moderate this comment, ये देखो यहाँ पे we have got notification of 2 comments because one comment is from admin itself and 2 comments are from new users. So if I approve this comment, I will write a new comment, and if we are going to reload this page, yes, now this comment is available on our post. So this is how comment works. And if you want to remove multiple comments, you can check the multiple comments and mark as spam or move to trash. ये mark as spam. What is spam? Spam is a comment that will be sent by any user for their advertised purpose or for sending multiple comments of same like that has no relevance to our post or something, so that
it's set as spam. If we move any comment to spam or trash, that comment will invisible from our post. If you can, if you have to add or delete multiple posts or want to approve multiple posts, so you can select it from here and click on approve and click on apply, and that all the comments are approved by you. If you want to check it, yes, now all the comments are approved. So, and if you want to remove any of the comments, then you can check it and mark as move to trash and apply. So we can see here in trash we have got one comment, and if you want to restore this comment, you can restore it from here, or you can delete it permanently from here. If we are going to delete this comment, that comment is deleted from our trash section also. And here it is showing the 3 comments that are approved by the admin, and if any comment is not approved or unapproved or moved to spam or moved to trash, then that comments are shown here. So only that's it in comment section. Thank you friends, thank you for watching this video.